In this lecture, let us talk about half subtractor and full subtractor. So the contents of this lecture are, we will discuss half subtractor and the full subtractor. So the subtractor is a digital logic circuit. So it is used in the computer or in somewhere in calculator. So in computer it is used in arithmetic logic unit and in other processes to calculate the address increment, decrement. So these operations perform. So there are two types of subtractor we will discuss here. One is the half subtractor and other is the full subtractor. So it's similar to the half adder and the full adder. Here in half subtractor we will use 2 bits. The operation of the subtractor is on 2 bits, and in full subtractor the operation is on 3 bits. So the first, let us talk about the 2-bit operation or the half subtractor. So there are 2 possibilities when we use the 2 bits. So it could be a 0-0 when both bits are 0 and 0. If we subtract 1 bit from other bit, then the difference is 0. So when the bit I will subtract 1 from 0, then what should I do? I should have to take a borrow. So this bit is showing for the borrow. The difference would be the 1. So here borrow is 1 and difference is 1. So when I subtract from 0 from 1, then difference is 1. So the borrow would be 0 in this case. When I subtract from 1 from 1, then difference is 0 in this case. The borrow would be 0. So I take the borrow. We take the borrow when one of the when I subtract the 1 from 0 in this case, we take the borrow. So here the minuend is lesser than the subtractant, so I will take the borrow. In all other cases, the minuend is equal or greater than the subtractant, so we have no need to take the borrow. So let us make up some truth table. The truth table defines the relationship between the input and the output. So in the half subtractor, we the 2 single binary digits A and B. So when we take operation on the bits A and B, then there are 2 output. So it could be a difference and could be a borrow. So the relationship between the inputs and outputs is defined by the truth table, as I already described in the previous lecture. So when both A and B are 0, so here A is the minuend and B is the subtractant. So when I will subtract B from A, so in the first case when both A and B are 0, so the difference should be 0 minus 0. In this case would be 0 minus 0 would be, sorry, in this case 0, in first case 0 minus 0 would be equal to 0. So in this case difference is 0 and borrow is 0. When the minuend is less and the subtractant is higher, so in this case what should I do? I should take a borrow. So then I will get the difference would be 1 and the borrow would be 1 in this case. So in this way, and I will subtract 1 from 0. So if higher order bits, so I will take some borrow here, then the difference would be, as I will take the higher bit, then its power would be higher than, I mean this least significant, this lower bit, its power would be higher than this lower bits. So the difference would be, in this case, would be the 1. So next, when minuend is higher than the subtractant, in this case the difference
1 minus 0, the difference is 1. So and the borrow in this case is 0. When both inputs are 1, so 1 minus 1 would be the 0, so the difference is 0, and the borrow in this case is 1, is the 0. So we will implement this truth table to so after implementing this truth table, we will get some digital circuit. So next, now solving the truth table in the Kmap. So here in the first case, when b is equal to 1 and a is 0, so we have the borrow was equal to 1 in our truth table. It is obvious, and the borrow is 1 when a is borrow is 1 when a is 0 and b is equal to 1. So we will implement in the Kmap. So when here this Kmap is for the difference is equal to 1 when a is equal to when the b is equal to 1 and a is equal to 0, and the difference is 1 when a was equal to 1 and b was equal to 0. So by implementing this Kmap, we will find the expression for the borrow. So in this case, the borrow is equal to the product of complement of a, here the complement of a into b, and the difference we can see here, it is the exclusive OR of input A and B. So this difference can be described by the exclusive OR gate. Now the next step after getting the expression or the logical expression for the output, so we apply or we construct the circuit. So in this case, here the difference can be described by the exclusive OR gate, whereas borrow, that is the product of complement of A into B. So by AND gate, we will make the input the complement of A and into B, so it will give the borrow. So this is the exclusive OR give the difference. So here we use number of inputs were 2 and number of output were 2. Input are described by A and B. The output are described by the difference and the borrow. The difference can be obtained by the exclusive OR logic gate, whereas the borrow can obtain by the AND gate, and we have used a NOT gate. Now let us talk about full subtractor. So now we will discuss the full subtractor. The full subtractor, the difference between the full subtractor and half subtractor is that in half subtractor we use the 2 inputs, whereas in case of full subtractor we often use 3 inputs. So in this case here we will use the inputs A, B and B. So it has 2 output. So output would be the difference as well as the borrow. Now let us talk about its truth table of the full subtractor. So here we have 3 inputs, those are A, B and B, and the output is the difference and the borrow out. So for in case of 3 input we have 8 combination. 2 raised to power 3 is equal to 8. So when the input A is equal to 0, B is equal to 0, B in is equal to 0. So in this case 0 minus 0, so the difference would be the 0. So here the borrow would be 0. Next, the input A is equal to 0 and B is equal to 0 and B in is equal to 1. When I will take the difference of A minus B, in this case the difference would be 0. So when I will subtract 1 from 0 here, so I need to get a borrow in this case. So the borrow will
So here the difference is 1, and borrow is 1. So in next case, when a is equal to 0 and b is equal to 1, so when I will subtract b from a, so 0 minus 1, so I need to take a borrow, so I will take a borrow here, so the borrow would be equal to 1. So in this case the difference would be also would be equal to 1. So in next situation, when a is equal to 0 and b is equal to 1, so their difference, so there we need to take a borrow would be equal to 1. So in this case, so here the difference would be, when difference would be 1, finally I will subtract 1 from 1, so the difference would be 0. Next, when a is equal to 1, so the b is equal to 0 and b in is equal to 0. In this case, 1 minus 0 is equal to 1, and here the borrow would be 0 and the difference would be 1. Next case, when input a is equal to 1 and b is equal to 0 and b in is equal to 1. So in this case, 1 minus 0 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0. So here the b out, so the borrow and difference both will be 0. Next case, when a is 1 and b is equal to 1, so their difference would be 0, and the borrow would be 0 and difference is 0. 0 minus 0 is also 0. In the final case, when all three inputs are equal to 1, so the difference between a and b would be 0. So when I will subtract this input from 0, so that I will need to take a borrow, so borrow would be equal to 1 here, and also will get difference which is equal to 1. Now I will implement this truth table into the Kmap. जब हम इसको Kmap में implement करेंगे इस truth table को, तो we will get some logical expression, और उससे हम जो है construct करेंगे digital circuit को. Now let us talk about the Kmap. इसको simplify करते हैं, implement करते हैं इस truth table को Kmap में. You guys are familiar with this with the Kmap. अगर हम borrow के लिए अगर हम Kmap implement करें, तो when a is equal to 0 and b is equal to 0, c is equal to 0, so that यहाँ borrow हमारे पास 0 था. borrow 1 आएगा जब a 0 था, b 0 था और c 1 था. In this situation, when इसको अगर हम देखें, जब a 0 था और b भी 0 था और b in 1 था, उस केस में हमारे पास borrow 1 था. या जब a 0 था, b 1 था और c b in हमारे पास, here c is equal to b in, so I can write c is equal to b in. तो when जब a 0 था, b 0 था और b in सॉरी a 0 था, b 1 था और b in 0 था, उस केस में हमारे पास borrow 1 आया. और जब ये तीनों इनपुट्स 1 थी, तो हमारे पास borrow 1 था. और नेक्स्ट केस में डिफरेंस हमारे पास, हमने इसके मैप में इम्प्लीमेंट किया. डिफरेंस 1 था जब हमारे पास a 1 था, b c 0 था. इस केस में जब हमारे पास a 0 था, b 0 था और b in 1 था. तो ये जो Kmap है, हमने डिफरेंस के लिए इम्प्लीमेंट किया है. नाउ अगर हम इसको बारो को, अगर इसके मैप को सॉल्व करें, तो वी कैन सी ये जो हमारे पास ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स, ये जो सेल्स हैं, दीज आर एडजेसेंट. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो आई विल गेट expression for borrow which is equal to borrow, I can write maybe borrow would be equal to, so here I can write a prime
ए प्राइम एंड और ये जो बी है दिस विल सिंप्लीफाई विद दिस बी प्राइम विल सिंप्लीफाई विद द बी, सो आई विल गेट ए प्राइम सी। नेक्स्ट ये वाला सेल और ये सेल और ये सेल भी एडजेसेंट है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आई विल गेट ए प्राइम और ये जो सी है सी प्राइम और सी जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। ए प्राइम बी आई विल गेट आंसर ए प्राइम बी। और नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाला सेल और ये वाला सेल दीज आर एडजेसेंट, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ए प्राइम प्लस ए विल कैंसल आउट, आई विल गेट बी सी। सो इस केस में प्लस बी सी। तो ये मेरे पास जो है हमारे पास बारों के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गए। नाउ लेट अस सॉल्व द Kmap फॉर डिफरेंस। सो जब डिफरेंस के लिए हम सॉल्व करेंगे इस Kmap को तो वी कैन सी हेयर कोई भी यूनिट्स कोई भी सेल जो है दूसरे सेल के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिफरेंस इज इक्वल टू, so in this case I can write a into b prime into c prime, here this is equal to b prime c prime। अगर इस सेल को देखें this is equal to a prime b prime into c। a prime then b prime into c। अगर इस सेल को देखें इस सेल को दिस इज इक्वल टू a b c। a सी। अगर इस सेल को देखें दिस इज इक्वल टू ए प्राइम बी इंटू सी, ए प्राइम बी इंटू सी प्राइम। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गया लॉजिकल एक्सप्रेशन, दिस इज फॉर डिफरेंट। तो नेक्स्ट स्टेप है we will implement लॉजिकल एक्सप्रेशन को सर्किट्स में, डिजिटल सर्किट्स में, लॉजिक गेट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, then we will get a logic circuit। so eventually हमारे पास जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो आई विल गेट ए, और ये मेरे पास इनपुट्स x और y का एक्सक्लूसिव आर लिया, उसके बाद फिर जो है तीसरी इनपुट के साथ जो एक्सक्लूसिव आर की आउटपुट है उसको तीसरी इनपुट के साथ एक और अगेन एक्सक्लूसिव आर, सो इट विल गिव यू द डिफरेंस। सो डिफरेंस इस केस में जो है सिमिलर है जिस तरह हमने सम लिया था। अब जो बारो है, बारो के केस में हमने एंड गेट एंड ऑपरेशन किया, एक्स प्राइम इंटू वाई ये जो आउटपुट है, उसके बाद इस एक्सक्लूसिव आर की जो आउटपुट थी और इसके साथ एंड किया, और ये हमारे पास जो है ये जो मेरे पास जो है कम्बिनेशनल लॉजिक अप्लाई करने के बाद मेरे पास 12
आउटपुट 12 यहाँ मिलेगी और डिफरेंस मिलेगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कोड कन्वर्जन, और कोड कन्वर्जन को हम देखेंगे। लेट मी समराइज माय लेक्चर। हमने जो है कम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने वी हैव लर्न फर्स्ट, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हमें समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ जाएंगे उसके बाद हमें नंबर ऑफ वेरिएबल या रिक्वायर्ड जो हमारे पास इनपुट्स हैं और आउटपुट्स वो हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये इस केस में यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 थी और आउटपुट 2 थी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनपुट और आउटपुट्स को हमने वेरिएबल असाइन करने हैं। आफ्टर दिस वी विल मेक ट्रुथ टेबल रिलेशनशिप। ये ट्रुथ टेबल जो है इनपुट्स और आउटपुट्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ट्रुथ टेबल को हमने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग Kmap टेक्निक, और Kmap से जो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएंगे उसको आपने लॉजिक डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट। और कीप इन माइंड हम क्यों जो है सिंप्लीफाई करते हैं जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होगा ये ट्रुथ टेबल को। इट गेव द कॉस्ट इफेक्टिव, हमारे पास जो आउटपुट रिक्वायर्ड हमारे पास सर्किट होगा दैट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम होंगे और एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाइड होगा, और ये इसका फ़ायदा है। दैट्स इट।